हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पार्क रियलिटी टीवी। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम रूसा मोबीन है और मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है। इंडिया के डिफरेंट हमने सिटीज के ऊपर जो है वो अपनी रिएक्शन जो है वो रिकॉर्ड कराए और नो डाउट इंडिया के शहर जो है वो बहुत खूबसूरत हैं। और अब जो है जैसे जैसे वक्त गुजरते जा रहा है उसमें जबरदस्त हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो सिटीज है उसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आती जा रही है। और आज जो हमारे पास वीडियो है वो एक यूट्यूब चैनल है नेस्ट डेली। इनकी वीडियोस बड़ी जबरदस्त सी होती हैं। ये जो है इंडिया विजिट करने आए होंगे और इन्होंने जो इंडिया में ऑब्जर्व किया वो उन्होंने अपनी वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है। तो उन्होंने इस वीडियो का नाम है 8 डेज इन रियल इंडिया, यानी कि जो उन्होंने खुद फील किया इंडिया में वो उन्होंने वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है। तो अभी तक मैंने वीडियो नहीं देखी ना और उषा ने देखी है। हमें ये टॉपिक इतना पसंद है, हमने कहा यार जबरदस्त सी चीज है, चलो अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ मिलकर इस वीडियो को देखेंगे। हमें वैसे भी इंडिया को एक्सप्लोर करना, उसकी चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। नो डाउट जबरदस्त सिटीज है वहां पर और जो है टेक्नोलॉजिकल हवाले से भी अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा ग्रूम कर रहा है, बहुत ज्यादा जो है ना एडवांसमेंट उसमें आती जा रही है। तो हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करके फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको मेरी तमाम तरह वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और मेरा वीलॉग चैनल है उरूसा मुबीन के नाम से, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग लाइव सेशन करते हैं एवरी संडे को 8:30 PM इंडिया का टाइम और पाकिस्तान का टाइम 8 PM होता है। और हर वीडियो का लिंक हमारे जरूर चेक कीजिएगा, जहां पे हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक के लिंक है और वीलॉग चैनल का भी लिंक है। वीलॉग चैनल पे यार आप लोग आए, आप लोग को भी पता चलेगा कि हम अपने ये जो पाकिस्तान है, हमारा सिटी है कराची, उसमें अपनी कैसी लाइफ गुजारते हैं। उसमें हमने एक वीडियो भी डाली जिसमें हमने ये बताया है कि हम ये रिएक्शन वीडियो कैसे बनाते हैं और फिर उसमें बीच में हमारे जो है ब्लूपर्स जो है वो क्या होते हैं, किस तरीके के, क्या उर्दू में हम लोग कहते हैं घबल्ले तो वो किस तरीके के होते हैं, तो आप लोग जरूर देखेगा। तो चलें जी अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3। I have just arrived to India! A country you might think is poor, but is actually rich. Rich with people. There are 1.3 billion of them. With culture, they have more than 1 million gods. And so many religions, even cricket is considered one. Rich with symbolism. So many dances for so many occasions and festivals. With food, flavors and color. India is rich, and for the next 20 days, my goal is to become as Indian as possible. So I'm turning vegetarian like many of them. This is my last piece of meat. I'm dressing up with more colors, and I'm trying my shot at their religion, cricket, unsuccessfully so. If in the next 20 days I can capture 1% of India's magic, then I'll be rich just like them. Hey, I hope you enjoyed this video. My name is Tony and I helped edit the video. We have 7 more amazing videos about India coming your way. But first, let me tell you a secret, and please don't tell Nas. Editing takes hours, and sometimes I get bored, so I play games, and this game sponsored the whole video. It's called Raid Shadow Legends. This RPG game has amazing graphics that will teleport you into a world of fantasy, and you can play completely for free. Raid has 16 different factions to choose from, orcs, dwarves, and many more. What I love about this game is that it allows for so many different kinds of playstyles. You can play risky and go all offense, or play it safe and use defense champions. My mains are usually the High Elves. They have some of the strongest and smartest characters around. Take a look at Ethos. He's a legendary champion that can attack all of his enemies at once with a giant blow. Destroy the enemy! Also, look at the graphics and details on his shield. This is insane! There's also online tournaments, local and global, so that you can battle with your friends and win amazing rewards. Wanna play? Click on the special link in the video description to download Raid to your mobile phone or PC to get 100k silver, 50 gems, 10 mystery shards, and 1 champion for free. Slasher.
You will find extra rewards here in your inbox for the next 30 days only. Okay, my break is over. I gotta get back to editing. Enjoy the beauty of India. Hi! One of the best parts of Indian culture is an Indian wedding. So today I decided to fake marry my actual girlfriend, me, in an Indian wedding! Here's how our Indian wedding went. The day before, we got the henna, the jewelry, and the fancy clothes and invited all of our Indian friends. On wedding day, I, the groom, arrived on a beautiful horse, surrounded by good-looking friends and lots of fireworks and music. And then I waited for my bride to arrive. She did arrive on a boat, then was carried by 4 men to meet her new husband. Together, we performed Hindu rituals to unofficially become husband and wife. And from that point on, our Indian wedding began. With amazing food, dance, and music. It's true, our wedding was not real, but the richness of Indian culture, weddings, and people are as real as they get. Yesterday, Alina and I had a wonderful day pretending to get married to show you the beauty of Indian weddings. But underneath all of this lies the bitter truth. People like her and I are not supposed to get married. We have different religions, different age, skin color, and income. In India, we would fall in 2 different castes. And in the caste system, you're only supposed to marry the ones who are like you in terms of religion or social status. If they're not, then you're in trouble with your parents or society. It almost feels like society expects me to marry her parents, religion, money, or career, and not her. As if your loved one's personality or humanity doesn't matter. This is not just India, it's all around the world, even where we come from. Reality hurts. For every marriage that takes place, remember, there are tens of others that don't. That's 1 minute. See you tomorrow. I've always wanted to become a vegetarian, but in countries like Brazil, Philippines, and Nigeria, it's very difficult to be one. They just love to eat meat. In India, it's easier than ever to be a vegetarian. Entire menus and restaurants are dedicated to vegetarian food. Meat is replaced with cottage cheese, and it tastes just as good, if not better. Even McDonald's has no beef hamburgers. This is made of vegetables. For actual vegetarians, it's like heaven on earth. All of this because in Hinduism, a cow and its meat are considered sacred. That's why cows roam the streets for free and everyone respects them. Sure, you will find meat in India, but Indian food has managed to be exceptionally good without depending on meat. That's why in India, I'm becoming a vegetarian. See you tomorrow. What you see behind me is real fire eating human corpses, because I've just arrived to the city of Varanasi, where people come to die. It's the holiest city in Hinduism. It lies on the banks of the Ganges River, where millions wash their sins away by bathing in its water. And when you enter that holy river, it's like a whole new world. It will make you pure again. And if you die near Ganges, you will attain the moksha, the eternal liberation. That's why at the end of their lives, people come to die here. At Varanasi, you will find daily rituals to pray for the river god. Here, you'll find daily cremation of bodies. You'll even find extremist agoris who eat the dead corpses and wear their bones. Varanasi is a spiritual powerhouse. It's one of the most raw, human, chaotic places I've seen, yet I found it to be the most peaceful one yet. That's 1 minute. See you tomorrow. Hi, I have just arrived to an engineering school in India, where 1.4 million students apply every year. Yay! But only 10,000 of them get in. That's an admission rate worse than Harvard and Stanford. It's the IIT engineering school in India, a country where millions aspire to become engineers. Because in India, people are smart. Ancient Indians invented the digit 0 and could predict planet positions. Modern Indians, they could solve a Rubik's Cube 3 times
times. By the time you finish watching this video, they could run companies like Google and Microsoft because the CEOs are both Indian. Inside the dark alleyways in India, you'll find beautiful technology offices where people are trying to code the next Amazon or Google. With 1.5 million engineers graduating every year, it's only a matter of time until the next Mark Zuckerberg is Indian. That's in minutes. See you tomorrow. I love it. When you think of a slum, like the one behind me, you think of poverty, danger, and unemployment. That's what many people think when they see the third largest slum in the world, Dharavi in Mumbai, India. From above, it's where 1 million people live in tiny houses. But from below, this is much more than a slum. It's a place that generates $650 million every year. It's where I saw a huge recycling business, pottery business, leather, and garment business. This product was made in Dharavi, not Milan, not New York or Paris. Here, I struggled to find someone who was not working. Even inside houses, women were working. And those that were not, I found them cleaning. Because even with dirty roads and no toilets, houses are clean inside. Dharavi is an economic powerhouse filled with huge businesses, engineers, artists, and hard workers. It just so happens to be called a slum. That's 1 minute. See you tomorrow. Namaste! Namaste! It's my last day in India. And in the past few days, I have tried to become as Indian as possible. I dipped my body in their holy river, the Ganga. I ate, like many of them, vegetarian food. I visited their pink city, Jaipur, spiritual city, Varanasi, and their slum city, Dharavi. And I got arrested by their police for droning. I played their sport of cricket, helped in cleaning their parks, celebrated their Deepavali festival, learned from their smartest, and hung out with their richest. Heck, I even got married like many of them. But as much as I tried to become Indian, I realized one thing. This country has more than 1 billion people and 1 billion cultures. Yeah! And everything I did was only 1% of what India has to offer. With words, India is one of the most diverse, welcoming countries in the world. Without words, India is... That's 1 minute. जबरदस्त वीडियो बनाई है 1 मिनट कर करके काफी चीजें कवर करने की कोशिश की है, मगर जाहिर सी बात है कि इंडिया के अंदर मोर देन बिलियन जो है वो लोग रहते हैं और पता नहीं कितने कल्चर्स वहां पर हैं, तो वो एक इतनी छोटी सी वीडियो के अंदर कवर करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मगर इन्होंने जो नैस है उन्होंने बड़ी कोशिश करी है इसको कि अपने इस छोटी सी वीडियो के अंदर वो जितना कवर कर सकते थे उन्होंने कवर किया और नो डाउट बड़ा जबरदस्त कवर किया। और खास तौर से जो मुझे बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग चीज लगी जो हमें नहीं पता थी वो ये कि स्लम एरिया जो है वो मुंबई का जो है उन्होंने दिखाया और उसके अंदर भी मतलब मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही, वो इस वीडियो के अंदर उन्होंने बताई थी कि कितने मिलियंस ऑफ डॉलर का वो वहां पे बिजनेस हो रहा है, जबकि वो स्लम एरिया है। और आप इमेजिन करें कि वहां पर मेहनत से काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार मतलब जिस शहर का स्लम एरिया ही इतनी ज्यादा इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो कमाता हो तो उसके बाकी एरियाज और बाकी सिटीज क्या कमाते होंगे। और मेहनत मतलब करे वहां पे औरतें भी मेहनत कर रही हैं, मर्द तो करते हैं, औरतें भी इतनी मेहनत कर रही हैं और सारे काम करते हैं, तो जाहिर बात है उसको तो फिर वो होगा। और सेकंडली ये भी दिखाया गया है कि स्टडीज वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी हैं और शादी का दिखाया गया है रस्म रिवाज, वो तो हमें पता ही था, पता ही होता है, मूवीज भी देखते हैं तो वो है। मगर ये है कि उन लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है क्योंकि उनकी जो शादी होती है वो बड़ी सिंपल सी होती है, वो चर्च में गए और शाम को जो है वो एक रिसेप्शन सा दे दिया तो वो होती है। मगर यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो बड़े जबरदस्त सी वो रस्में करी जाती है, हर तरह की ये वो तो रस्में और उसका बड़ा मजा अलग है। और दूसरा ये दिखाया गया है कि उन्होंने स्टडीज का बताया और खाना, और ये बात सच है कि गोश्त और ये चीजें वो भी वहाँ खाई जाती हैं, लेकिन गोश्त की चीजें क्या वेजिटेरियन मीट वगैरह से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेबल्स है ना उनसे बहुत कम चीजों में और जायका भी आना ना बहुत मुश्किल होता है। तो वो ही चीजों से वो कह रहे हैं बर्गर भी बनाया हुआ है, बर्गर मैकडोनल्ड्स का हम लोग बर्गर खाते हैं कमाल की बात तो उसमें चिकन होती है मोस्टली, तो अब वो तो उससे के वेजिटेबल से बना हुआ है वो कबाब, तो वो तो
कमाल की बात है कि वो इतना अच्छा उसका टेस्ट होता होगा। इस चीजों से ना बड़ा दिल करता है कि बंदा इंडिया जाए और ये विजिट करे। हाँ। तो मैं हमेशा की तरह फिर दोबारा से कहते थे इस वीडियो में कि भाई हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हो जाए। हम कोशिश करते हैं कि प्यार जो लव है वो पीस है उसको फैलाएं, और हम चाहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे हो जाए ताकि इंडिया वाले पाकिस्तान विजिट करें हमारी सिटीज को, हम लोग जो है वो इंडिया की सिटीज को विजिट करें और जबरदस्त सा माहौल जो है ना एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए। तो आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा इस वीडियो को। मैं दोबारा बता दूं हमारा वीलॉग चैनल है उरूसा मुबीन के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पे हमें ज्वाइन कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। और जो है जो डिस्क्रिप्शन में हमारे Yes. लिंक होते हैं, प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स दिए गए होते हैं इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, तो उनको भी जरूर, और वीलॉग चैनल का हाँ। भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अब जो है आपसे हम बाय बाय टाटा करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में हम आपसे फिर से जल्दी से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।